Good evening, everyone. Warm welcome to. Yes, I guess now everything fine. Okay. Good evening, everyone. Warm welcome to Testbook Super Coaching Regulatory Bodies YouTube channel. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session, which we call it as Finance Current Affairs. So, in this session, we will be covering the current affairs for 10th to 12th of September. This session is again going to be very important because we have one of the major announcements which have been done by SEBI recently. Along with that, we have one major announcement from RBI and other relevant finance related news will be covered in this particular session. So before I start, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can begin the discussion without any further delay. Give me a thumbs up so that we can start. Shraddha, good evening. May I have a reply, guys, so that I can begin? Everything is fine. We are good to go. Okay. Thank you so much. Chalo, let's get started. As I promised that in the next session, we will be discussing many important questions from the last year's data, which we have from the last session, which we have taken. And I'm pretty sure you will be, you are ready to discuss the same. 1 second, guys. Just hold on for a while. Just let me know the screen is clear now. I guess there was some issue, but I hope now it's fine. ठीक है जी. तो last class में we discussed a report which has been submitted by SEBI along with CIRF, that is basically based on the small businesses, and they have referred small businesses to be those organizations which have borrowed loan up to 5 crores. And in this particular report, they have not only targeted the enterprises, they have also targeted the individual loan borrowed for the business purposes, as well as the loan borrowed by individuals who are having the enterprises as well. So these three categories were discussed in the previous session in much detail. So we will be discussing at least 5 to 6 questions on the same, which will be a good revision for you. First question is related to the report related to equity mutual funds, that yes, now India is shifting its investment from term deposit to equity mutual funds. Demat account openings are used as a proxy for financial inclusion in analyzing mutual fund flows. That is true. That is true. Second point, lower fixed deposit rate has pushed the investors towards equity oriented mutual funds. That is absolutely correct. Business confidence index is among the top 3 predictors of mutual fund flows as per the machine learning models. That is correct. As per the analysis, it has been said that equity mutual fund flows predict the real GDP growth. No, sir, this is wrong. Actually, it's opposite. Whenever there is a real GDP growth, that means whenever there is growing GDP in an economy, that results in increase in mutual fund, especially equity mutual fund investment. But increasing mutual fund investment will boost the GDP. That is not correct. So prediction is the other way around. That means if GDP increases, it is predicted that equity mutual fund investment may increase. So fourth statement is wrong. Moving on to the fifth one, retail investors holding equity of mutual fund units greater than 2 years increased to 61% by March 2025. That is correct. अब जो investors है, they are holding their mutual funds for more than 2 years, and the percentage of these kind of investors is more than 61%. So the answer is A option, absolutely correct. Moving on to the next news or the next question. So the next question is now on your screen. What does the question says? So this question is basically related to the report which we have discussed in the previous session. I'm pretty sure that you all have watched, you all have downloaded the PDF, you all have gone through with the report. Now let's see who all can answer. In the report, small businesses are defined as those aggregate credit exposure is up to 5 crores. That is true. The definition aligns with the MSME classification under investment and turnover. नहीं सर, वहां तो criteria बिल्कुल different है. वहां पे investment का अलग, turnover का अलग, और recently it has been increased or it has been done 2.5 times in case of investment, 2 times in case of turnover. तो ये तो गलत हो गया.
Both enterprises borrowing in business name as well as sole enterprises borrowing in personal name for business are included. That is correct. Consumer Bureau loans like loan against property or commercial vehicle loans are covered if used for business purposes. That is correct. If the borrowing is done by an individual, it will be the part of Consumer Bureau, otherwise it will be the part of Commercial Bureau. The study excludes Commercial Bureau reports. नहीं सर, उसके बिना तो स्टडी होगी ही नहीं. तो आंसर क्या होगा सर? बी ऑप्शन 1, 3 and 4 are the correct statements. 1, 3 and 4 are the correct statements. I hope it is clear to you. Moving on to the second question. Borrower segment, जो इस रिपोर्ट में borrowers है उनकी segmentation कैसे की गई है? Enterprises report only to the Commercial Bureau. That is true. Sole proprietors, they report only to the Consumer Bureaus. That is true. The overlap segment का मतलब कि आप इंडिविजुअल हैं और उसके साथ साथ आपकी एक एंटरप्राइजेस भी है. You are borrowing not only at the name of your business, you're borrowing at the name of your business as well. तो आप दोनों कैटेगरीज में फॉल करेंगे. बिल्कुल सही है. अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं जिसमें विद एंटरप्राइजेस प्लस विदाउट एंटरप्राइजेस, अगर मैं दोनों को इंक्लूड करता हूं तो उस केस में जो ये पोर्टफोलियो है दैट इज 77%. बिल्कुल करेक्ट. इन द लास्ट सेशन वी हैव एडेड दिस वैल्यू. नेक्स्ट इज एंटरप्राइज हेल्ड द हाईएस्ट शेयर ऑफ स्मॉल बिजनेस पोर्टफोलियो इन जून 2025. नहीं सर, अभी तो आपको बताया कि हाईएस्ट शेयर सोल प्रोप्राइटर के पास है. सो आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन. 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देन यू सडनली कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू से पता नहीं आरबीआई क्वेश्चन बनाता कहां से. आरबीआई वहीं से क्वेश्चन बनाता है जो आप पढ़ते हो. बस प्रॉब्लम ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप ध्यान नहीं देते कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. बट आई होप दीज सेशंस व्हिच आर अटेंडिंग ऑन रेगुलर बेसिस दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. तो ये क्या कह रहा है? स्मॉल बिजनेस पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 31.3 लाख करोड़ to 45.3 lakh crores. So that is absolutely correct. Data sahi hai. Number of active loan has increased from 5.7 crores to 6.9 crores. Absolutely correct. Year on year growth slowed down from 21.4% to 19.3%. Correct. Priority sector lending and credit guarantee scheme supported expansion. Obviously sir, they have supported the expansion. MSME portfolio up to 50 crore exposure was valued at 26.8 lakh crores. Nahi sir, if I'm not wrong, it was valued above this given value. वो value कितनी थी? Anyone can help me with that? What was that value? Can I expect this data answer from you? देखते हैं. I'll wait for few seconds. Otherwise मुझे तो आंसर देना ही है. I'll surely be giving you the correct answer. सर अगर हम MSMEs की बात करें और we are talking about the MSMEs with the exposure of up to 50 crores, the portfolio size was 36.8 crores. It was 36.8 lakh crores. So this is wrong. So answer is going to be 1, 2, 3, 4. Answer is going to be 1, 2, 3, 4. That is absolutely correct. ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, क्लियर हो गया. आगे बढ़े. बहुत बढ़िया. Doers has given the correct value. Yash has given the correct value. Impressive. चलो जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है प्राइवेट बैंक्स हेल्ड द लार्जेस्ट शेयर 34.4% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस लेंडिंग इन जून 2025. सर एज पर द रिपोर्ट जो लार्जेस्ट शेयर है among the lenders, it is with the private bank. That is absolutely correct. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था प्राइवेट बैंक, फिर NBFC, फिर PSUs. If you remember, NBFC share has increased to 28.2%. Is it correct? That is absolutely correct. PSU bank share increased from 25.6 to 28.8. नहीं सर, PSU का तो शेयर कम हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ, rather it has decreased. Services sector became fastest growing with 34% year on year growth. अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो क्या सर्विस सेक्टर आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है? बिल्कुल है सर, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 34% है. इवन इफ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ट्रेंड में तो सबसे ज्यादा जो शेयर है लोन का
that is 27.8%. The share is also highest with the service sector, that is true. Trade sector share increased from 23.4 to 27.8. I would say no sir, it has decreased, it has not increased. टर्म सही है, अगर आप वैल्यूज की बात करेंगे वैल्यू सही है, बट दिस हैज डिक्रीज, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2, 4. Third and fourth statement, sorry, third and fifth statement are wrong. Please doers, mark it correct. It is not increased, it is declined. So that is the reason A option is correct. Next, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, UP, Karnataka accounts for almost 46% of the total portfolio. That is correct. UP showed fastest growth of 20.7%. That is correct. Gujarat has lowest stress, that is portfolio at risk 91 to 180 days at 0.9%. Correct. Rural share of loan increased from 26.9 to 29%. That is true. Women borrower accounted for approximately 40%. नहीं सर, इंडिया में इतना कहाँ. अगर हम women की बात करें तो women का जो शेयर होल्डिंग है in the total loan, that is 20 to 21%. So answer is going to be A option. क्लियर हो गया जी, समझ आ गया, मजा आया. तो जिन्होंने घर जाकर पीडीएफ को ढंग से पढ़ा होगा, जिनको लगा होगा कि हाँ ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, दे मस्ट हैव बीन इन अ पोजीशन टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, उनको मजा भी जरूर आया होगा. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. हमारी आज की जो पहली न्यूज है दैट इज अगेन रिलेटेड टू यूपीआई. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूपीआई पे इस बार एक पैराग्राफ फेज 2 में या फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर श्योर है. अब लिख के ले लो, यूपीआई रिलेटेड पैराग्राफ आएगा या फिर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा. अब ये जो न्यूज है वो कैसी है, अगर आपको याद हो कुछ समय पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी यूपीआई पे. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस यूपीआई पे? एनीवन इन द क्लास कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस. यूपीआई पे मैंने पढ़ाया था, इसी सेशन में पढ़ाया था, और मैंने ये भी बताया था कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. वो क्या था सर? यूपीआई की अगर हम बात करें, दैट इज बेसिकली द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. एंड इफ आई टॉक अबाउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट इज developed by NPCI, National Payment Corporation of India, and it allows you to transfer the funds without even knowing the account number of the receiver. अब अगर हम बात करते हैं यूपीआई की, तो यूपीआई के साथ एक लिंकअप हुआ है, और वो जो ये लिंकअप हुआ था सो दैट वाज लिंक्ड अप विद सिंगापुर. अगर आपको याद आ रहा हो तो सिंगापुर का जो इंस्टेंट सर्विसेज है उसके साथ जब ये टाई अप किया गया क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए, देन दैट वाज यूपीआई पे नाउ लिंकेज. इफ यू रिमेंबर इट वाज यूपीआई पे नाउ लिंकेज. तो ये जो यूपीआई पे नाउ लिंकेज था, इट इज बेसिकली यूपीआई इंडिया का और पे नाउ सिंगापुर का जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, उन दोनों का कोलैबोरेशन किया गया. और इसकी बातें शुरू हुई थी फरवरी 2023 में, फिर जाकर ये 2025 में फाइनली इंप्लीमेंट हुआ. अब ये कैसे काम करता है? If a user is in India, can send money to Singapore directly from their UPI app. User in Singapore can send money to India through their Pay Now app directly into the Indian bank accounts. So ये जो transfers हैं, they are instant, they are low cost, and they are available 24/7. So an Indian student in Singapore want to send money to his parents, he can open up the bank application in Singapore, select Pay Now. And in Pay Now, there is an option of UPI. Click on UPI, enter the UPI ID of their parents, and funds can be easily transferred. तो अब इसी का एक और अपडेट आया, और इसका जो नया अपडेट आया that has been related to some other nation. Let's talk about it. Union Minister Jyotiraditya M. Scindia, holding charge of Ministry of Communication and Ministry of Development of Northeastern Region, has launched UPI-UPU integration project at 28th Universal Postal Congress in Dubai, UAE. So this project is a landmark step in evolution of global remittances, aligning India's fintech strength with the global postal networks. What is it? So on one side we have UPI. UPI is India's, we all know that, instant real-time payment system developed by NPCI, was developed back in 2016. 24/7 services are provided. Apps like PhonePe, Paytm, Google, Beam, they all uses your unique mobile number, and with the help of your mobile number, you can transfer the funds. You can register to these
applications once by adding your bank details. After that, you can utilize it without entering the bank details again and again. So UPI has been adopted and accepted in the countries like Singapore, as I was talking, via Pay Now linkage. It is already accepted in UAE. It is already accepted in Sri Lanka, Bhutan, Nepal, and many other countries. But what is this UPU? Sir, it is Universal Postal Union. So what is it? So UPU is a specialized UN agency, the second oldest international organization with its headquarters in Bern, Switzerland. What is the role? Sir, it facilitates cooperation among the 192 member countries in the postal sector, ensuring global connectivity in postal as well as फाइनेंशियल सर्विसेज. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर आपने कहा पोस्टल सर्विस का लिंक यूपीआई के साथ कैसे है, वो इस तरह से लिंक है बिकॉज यूपीयू इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग अ कोऑर्डिनेशन टू इट्स मेंबर्स फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी इन पोस्टल सर्विसेज बट ऑल्सो इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज. अगर हम फंक्शंस की बात करें, इट एक्ट एज अ फोरम फॉर अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल पोस्टल स्ट्रैटेजीज. So what is the function? So it act as a forum. It basically act as a forum और ये जो forum है ये allow करता है to come up with the standards, technology and global postal strategy जिसकी मदद से all over the globe the transactions can be done in a very appropriate manner. ठीक है जी, clear हो गया ये point? I hope this point is clear. I hope this point is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला point क्या कहता है? अब ये प्रोजेक्ट क्या है जिस प्रोजेक्ट के तहत ये टाई अप किया गया? इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव इज सीमलेसली इंटीग्रेट इंडियाज यूपीआई सिस्टम विद द यूपीयूज इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म. सर क्यों? इससे होगा क्या? व्हाट विल बी द बेनिफिट? तो इसका आंसर क्या है? सर दिस इज गोइंग टू वर्क इन दिस मैनर. द इंडिविजुअल्स हु आर अब्रॉड दे सेंड रेमिटेंसेस through post offices which are connected with UPU. So those post offices which are connected with UPU, they are not only providing you the service to send your letters, to send your gifts, to send your couriers, it also allow you to send or to remit the funds. In India, funds are received directly into the UPI linked accounts. So advantages will be, now if you are staying outside India and you are going to a post office which has linked up to UPU, and through this UPU linked postal services or UPU linked post office, you can scan the code or you can directly provide the UPI address to which you are trying to transfer the funds. तो आप वहां पे अपनी UPI ID दीजिए, आपके घर पे आपकी फैमिली को back in India, they will receive the funds through the UPI ID itself. So it's a faster cross border remittance, obviously. लोअर कॉस्ट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम सोसाइटी वर्ल्ड वाइड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, या फिर वी गो फॉर बैंक ट्रांसफर्स. दे आर नॉट ओनली आई वुड से slow in comparison to this, but they are also much more costlier in comparison to this basic service which has been provided. So Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, it is a secure global messaging network which is used by the banks and financial institutes to send or receive information about the financial transactions. Do give me in the comment section where is the headquarter of SWIFT. I hope you all know about the SWIFT code. एक बार बता दूं मैं जल्दी से. SWIFT code की अगर हम बात करें, in order to identify the bank's branch, so the first 4 digits they basically identify the bank. So how they identify the bank in that particular scenario, you need to understand that we have SBIN, that means it is State Bank of India. It is State Bank of India. Then we have IN, this is the country code. Then we have city code, and after city code we have the branch code. After city code we have the branch code, so that the identification can be done. तो ये कोड्स आप याद रखिएगा. स्विफ्ट कोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे आरबीआई तो सवाल शायद नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी और बैंक एग्जाम में कभी जाएंगे तो वहां पर ये एग्जामिनेशन या एग्जामिनर जरूर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर फॉर bank, then 2 are for, I would say, your country code, total is 6, then 2 is for your location code, that is city,
and then we have the 3, which is the branch code. Generally this is actually, it is 8 to 11 character code. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा, I'm pretty sure you will be in a position to answer it for sure. ठीक है जी. Going back to the point, then lower cost, as I said, expand access by leveraging postal networks, especially in the rural and semi-urban areas. तो अब rural and semi-urban areas में भी इस service का expansion किया जा सकता है. Why it is important for Indian economy? India is the world's top recipient of remittances, as we have received more than $100 billion in last $100 billion every year in last 3 years, if I talk about the data. And lastly, it was $125 billion as per the World Bank report. That is the reason this is an important tie-up for India. Second is traditional cross-border payments. They are expensive. Average cost is around 6% of transaction value. Then integration with postal network enhances financial inclusion, especially for rural India, where the post offices play an important role. तो अब UPU से लिंक जो पोस्ट ऑफिस है, वहां पर अब यूपीआई भी अवेलेबल है टू सेंड एंड रिसीव द फंड्स. फॉर ग्लोबल रेमिटेंसेस, रेमिटेंस कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, इंडिया गल्फ, इंडिया यूरोप, इंडिया यूएस, दे विल हैव दिस बेनिफिट. प्रोजेक्ट अलाइंस विद G20 एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रिड्यूसिंग द रेमिटेंस कॉस्ट अप टू 3% बाय 2030. उसके बाद अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं, इंडिया शोकेसेस UPI as a digital public infrastructure model, not only for India but for the world. It strengthened the India's leadership, especially in the global fintech diplomacy. Who has developed it? So it has been developed by Department of Post under the Ministry of Communication. Then NPCI, that is International Payment NPCI International Payment Limited, which is an international subsidiary of NPCI, and along with UPU, that is Universal Postal Union. Got it? अब मैंने एक टर्म रेफर की थी, दैट वाज ड्यूरिंग द 28th कांग्रेस. अब क्वेश्चन है कि सर ये 28th कांग्रेस क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दो. तो अगर मैं कहूँ 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई दुबई, तो फेज 1 का क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. आरबीआई यहां पे पूछ सकता है, identify the city in which 28th Universal Postal Congress was organized. Dates were 8 to 19th of September. Venue Dubai World Trade Center. Theme is leading change, creating the future. Chairperson you can ignore. Agenda is important. Adoption of the Dubai's strategy 2026-29 roadmap for modern postal services, including e-commerce, logistic and digital finance. Got it guys? Clear हो गया? Nothing much is important. ये मैंने आपको यूपीयू के बारे में डिटेल दे दी है. यूपीयू की डिटेल आप एक बार चेक कर लेना. अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट. ठीक है. अब मैं थोड़े से करंट अफेयर्स की बात कर लूं इसी से रिलेटेड. अब ये 2 तरह की न्यूज हो गई. वन इज यूपीआई, जिसके लिए मैंने पे नाउ लेटर वाला आपको पहले ही बता दिया, और किन कंट्रीज के साथ या किन कंट्रीज में यूपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. बट उसके साथ साथ इंडियाज डिजिटल पुश अब्रॉड, UPI is already in talks with over 30 countries for adoption. G20 नाम आया तो मैंने उसकी प्रेसिडेंसी बता दी. Showcase UPI as global model for digital public infrastructure during its presidency in 2023. IMF 2024 Global Remittance Outlook emphasize reducing the remittance cost, which perfectly aligns with UPI-UPU service. BRICS expansion, new focus on alternative cross-border payment system in order to avoid these high पर पेमेंट और पर ट्रांसफर चार्जेस. ठीक है जी. क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर. इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर देते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोजेक्ट इंटीग्रेट्स इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म. इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, NPCI International Payments Limited and UPU. That is correct. The primary objective is to facilitate faster, low-cost cross-border remittances through postal network. True, India has committed $100 million to support innovation in e-commerce and digital payment under this particular project. क्या मैंने इस प्रोजेक्ट पे कोई पेमेंट कमिटमेंट की बात की? सर आपने तो कोई कमिटमेंट की बात नहीं की. तो क्या यहाँ पे कोई कमिटमेंट है या आपने मिस कर दिया? उसका क्या आंसर होगा? सर ये पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये गलत है. इस पर अगर मैंने बात नहीं की तो इसका मतलब दिस इज नॉट एज द पार्ट ऑफ दिस. दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. तो 1 2 3 5
1 2 3 5 का मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के हरिमोहन अंकुल हैज गिवन द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले न्यूज है रिलेटेड टू सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सिट टाइट, आई विल बी टेकिंग अराउंड 15 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज और मे बी 10 मिनट्स एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज। सबसे पहली चीज, डू यू रिमेंबर delisting of company? What is delisting of company? Delisting of company means when a listed company is asked by SEBI to be delisted. मतलब क्या हुआ? Whenever you set up a private limited company, that means you are allowed to have minimum 2 to maximum 200 shareholders. You cannot sell the shares openly in the market. You are not allowed to issue the shares openly to the public. Your company is not even registered on the stock exchanges, and your shares or company shares cannot be traded on the stock exchanges as well. But then we reach to SEBI, we file our red herring prospectus, and after filing the red herring prospectus, we look forward for the SEBI approval, and once the SEBI give us the approval, we go public, and from private limited, a company is termed as a limited company. For example, you listen, many companies are going public, they are issuing the IPO. This process is listing. But when a listed company is asked by SEBI to be transferred as private limited company, that is known as delisting. क्या सर सेबी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ capital market, and most importantly SEBI is quasi judicial, quasi legislative and quasi executive organization which has the power to frame the laws, implement the laws, and even challenge and come up with the decisions in case of any kind of breaching of law or any kind of law is breached. Now in this case SEBI again came in the picture, and SEBI ने कहा था कि जितनी भी public companies हैं, there is a condition that in case of a public company, your public shareholding should be at least 25%. यानी कि आपकी जो कंपनी है उसकी जो शेयर होल्डिंग है that should be well distributed among the public, and it should be at least 25%. But in that particular case, SEBI has given a timeline to the public sector units, to the government owned units कि कोई बात नहीं सर, आप गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा, आपके पास नहीं हो पा रहा, अभी इन टारगेट्स को आप अचीव नहीं कर पा रहे, डोंट वरी सर, आई विल गिव यू सम मोर एक्सटेंशन। तो सेबी ने वो एक्सटेंशन दी थी। अब उसी एक्सटेंशन से रिलेटेड, उसी न्यूज से रिलेटेड एक और नई अपडेट आई है, एंड दिस अपडेट इज दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई होप द स्टेज इज सेट, आपको मतलब समझ आ गया कहां से ये न्यूज बनी है, क्यों ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा इस न्यूज को डिकोड करते हैं। सेबी has introduced special relaxation for public sector undertaking where the government already hold 90% or more equity, easing voluntary delisting process. तो सेबी ने कहा कि भैया जिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 90% या उससे ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पब्लिक से शेयर खरीद लो और अपनी कंपनी को क्या कर दो, प्राइवेट लिमिटेड बना दो, इसे हटा दो एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरा पॉइंट है रिवाइज नॉर्म्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्लैशिंग द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इस पे मैं आऊंगा। सो दीज रिफॉर्म्स आर बेसिकली एम्ड इन इंश्योरिंग एफिशिएंट एग्जिट फॉर PSUs एंड डीपनिंग द इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन। इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं रिलैक्सेशन फॉर PSU डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग का मतलब परमानेंट रिमूवल ऑफ अ कंपनीज शेयर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी सीजेस टू बी अ पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी, जैसा मैंने आपको समझाया। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग इनिशिएटेड बाय द कंपनी और प्रमोटर इटसेल्फ। वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मतलब क्या, मैं कंपनी का ओनर हूं और मैं अपनी मर्जी से चाह रहा हूं कि मैं इस कंपनी को डीलिस्ट करना चाहता हूं। तो यूजुअली टू कंसोलिडेट द ओनरशिप, रीस्ट्रक्चर और रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, दिस इज डन। कि सर बहुत सारे कंप्लायंसेस है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके देने पड़ते हैं, मैं नहीं कर रहा, आई एम गोइंग प्राइवेट। फॉर PSU डीलिस्टिंग इज ऑफन लिंक्ड टू, लेकिन जब हम PSU की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमने किसी कंपनी को डीलिस्ट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, तो बेसिकली दैट इज अलाइंड विद स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटेशन गोल्स। मतलब जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी को
51% से ज्यादा शेयर बेचती है, एंड इवन कंपनी ट्रांसफर इट्स मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. एंड if the government is selling out its all the shares and it has been given to the private players, that is privatization. तो ये जनरल होता है, बट this time it is not because of strategic disinvestment, it is not because of privatization, rather it is because of the SEBI rules, where SEBI says that a public company should have a public shareholding of at least 25%. अब इसमें एक फ्रेमवर्क था, वो फ्रेमवर्क क्या कहता है? Required reverse book building mechanism, price discovered based on the bids from the shareholders. अब पॉइंट क्या आया सर? पॉइंट ये आया कि अब अगर आपकी कंपनी डीलिस्ट हो रही है, तो जिनके पास वो शेयर्स है, आपकी कंपनी के जिनके पास वो शेयर्स हैं, अब ऑब्वियसली वो बंदा उन शेयर्स को होल्ड नहीं करना चाहेगा, बिकॉज नाउ योर कंपनी इज नो मोर, और योर कंपनी शेयर्स आर नो मोर traded on the stock exchange. So in that particular case, the promoter, in our case, that is the government, government need to purchase back or buy back the shares so that the delisting can be done in a proper manner, है ना? अब उसी को अचीव करने के लिए they identify the price at which the purchase will be done, है ना? तो पहला जो हमारा ओल्ड फ्रेमवर्क था, दैट वाज बेस्ड ऑन द रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म, जहां पे प्राइस को डिस्कवर किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द बिड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. वॉट एवर बिड्स द शेयर होल्डर हैज बीन गिविंग, उन बिड्स के बेसिस पे प्राइस वाज डिस्कवर्ड. हाई शेयर होल्डर रेजिस्टेंस लेड टू द फेड डीलिस्टिंग अटेम्प्ट्स. लेकिन जब ऐसा करने की बारी आई तो भैया जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने माना नहीं, तो जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस था वो फेल हो गया. ये जो प्रोसेस था ये इवेंचुअली क्या हो गया? फेल हो गया. सो इन आरआरबी द कंपनी प्रमोटर ऑफन बाय बैक द शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक शेयर होल्डर्स. Public shareholder, they submit their bids, price at which they are willing to sell. Based on these bids, a discovered price, that is an existing price, is determined. And if the promoter accepts the price and acquire 90% shareholding, the company gets delisted. Simple सी बात है. अब इस RBB को क्यों यूज किया जाता? दैट इज रिवर्स बुक बिल्डिंग. सर रिवर्स बुक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, it ensures fair exit price for the small investors and it prevents promoters from forcing delisting at a very low valuation, है ना, at a very low valuation. अब पॉइंट आया कि सर ये क्या आपने नई बला का नाम दे दिया, that is floor price. What is floor price? So before bidding starts, a minimum offer price, that is the full floor price, must be declared, and this is based on the SEBI rules. What are these SEBI rules? SEBI says that the 60 days average market price of the shares as well as the highest traded price in the past 26 weeks and other valuation methods if needed are used to identify the floor price. It is used to identify the floor price. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? ठीक है सर, आप क्या कर रहे हो, आपने एक फ्लोर प्राइस भी डिसाइड कर लिया, फिर आपने अपने सेलर से ही बिड करवा लिया और बिड करवाने के बाद यू आर परचेजिंग देम. अब इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो सही है ना, इट इज गुड इनफ. बट दिस प्रोसेस कंसिडर्ड टाइम कंज्यूमिंग एंड इम्प्रैक्टिकल फॉर PSUs where we have very low public floating of up to 10% or even less than 10%. तो सर ये जो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और जब ये समझ आया कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 7-8% के शेयर है, उसके लिए इतना ज्यादा इनिशिएटिव, इतने सारे काम करने पड़ेंगे, तो क्यों ना एक नया फ्रेमवर्क लाया जाए. तो एक नया फ्रेमवर्क आया ओनली एंड ओनली फॉर delisting of PSUs, and that too where the government shareholding is greater than 90%, but it is not applicable on NBFCs, banks and insurance companies. अब इसमें क्या चेंजेस किए गए? अब इसमें यह कहा गया delisting can be done at fixed price, floor price नहीं, fixed price, which is equals to 15% at least above the floor price. तो इसमें क्या कहा कि सर अब आप क्या करो, फ्लोर प्राइस कैलकुलेट करो, और फ्लोर प्राइस कैलकुलेट करने के बाद बिडिंग कराने की जरूरत नहीं है. इसके ऊपर 15% मिनिमम, उससे ज्यादा जितना आप देकर शेयर्स खरीद सकते हैं, खरीद लो. सेबी हैज नो प्रॉब्लम विद दैट. सेबी हैज नो प्रॉब्लम विद दैट. अब यहां पर जो एक पॉइंट है दैट देयर हैज बीन अ चेंज. वो चेंज क्या है? अब अगर मैं उस चेंज की तरफ बढ़ूं,
तो वो चेंज क्या कहता है न्यू फ्रेमवर्क में, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, पहली चीज तो ये कि सर ये जो आप पॉइंट की बात कर रहे हैं, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली, it will be applicable only and only for the PSUs where we have at least 90% shareholding with the government. And here we will be using a term that is fixed price. Here the word which is going to be used, that is fixed price, which is faster and simpler. How the fixed price is decided? So it is decided, it should be at least 15% above the floor price. अब ये फ्लोर प्राइस क्या है? सब मैक्सिमम प्राइस पेड बाय द एक्वायर और प्रमोटर इन द लास्ट 26 वीक्स, और उसके साथ साथ एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द ट्रेड्स इन द लास्ट 52 वीक्स, इन द लास्ट 52 वीक्स। ठीक है जी, ये जो एवरेज 60 डे वाला प्राइस था, अब इसको बढ़ाकर डेज की बजाय क्या कर दिया, लास्ट 52 वीक्स कर दिया। सो इंश्योर्स फेयर प्राइसिंग वाइल अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग बिडिंग। तो उसमें ये कहा गया कि फेयर प्राइस तो आपको मिलेगा, बट बिडिंग का जो झंझट है, उसमें जो टाइम है, वो हम बचा लेंगे। रिलैक्सेशन इन शेयर होल्डर्स अप्रूवल। अर्लियर 2/3 पब्लिक शेयर होल्डर अप्रूवल वॉज नीडेड, then only buyback can be done. Now it is relaxed for eligible PSUs. अगर आप एक PSU है with government share more than 90%, तो ये समझो गवर्नमेंट ने ये नॉर्म है कि हम आपके फेयर प्राइस, हम आपके शेयर के बदले में फिक्स प्राइस देंगे, लेट्स से 20% अबव द फ्लोर प्राइस, तो वो आपको मानना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन टू गो। सेटलमेंट मैकेनिज्म है, एग्जिट विंडो ओपन 1 year. If shareholder don't tender shares, PSU must deposit unpaid money with the exchange within 30 days. Exchange holds the money for 7 years, giving investor ample time कि आओ और अपना पैसा ले जाओ। इसका implementation की अगर मैं बात करूं तो facilitate strategic PSU exit along with government disinvestment agenda, ensure minority shareholder protection and adds predictability. अब यहां पर ऐसा नहीं है कि बेवजह बिना देखे आपका डीलिस्टिंग होगा। नाउ इट इज क्लियर कि अगर आपकी गवर्नमेंट के शेयर 90% से ज्यादा, तो डीलिस्टिंग हो सकता है। अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डीलिस्टिंग को। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज ऑफ सेबी। सेबी हैज कम अप विद द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू infrastructure investment trust. Now the question is, what does it means? Answer to this particular question, guys, let's suppose I am a contractor, and I am going to construct a road from Delhi to Mumbai, and let's suppose I have already got the tender from the government. This project is going to be of 20,000 crore rupees, but I don't have the appropriate funds, so I can reach to the public and I can borrow the funds I can raise the funds from the public, and I'll say that from this investment I will be earning the profit by collecting the toll, and I will be sharing that profit with you as per your share, that is known as infrastructure investment trust. So it's a collective investment vehicle similar to mutual fund, but for infrastructure. Investors, they pool money, sponsor, invest in infrastructure assets, generate regular income through user charges or toll regulated by SEBI to promote infrastructure financing, and it is very similar to REIT, that is Real Estate Investment Trust, जहां पे रोड की जगह कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। सेम पुराने नॉर्म्स क्या थे? सो द पुराने नॉर्म्स थे, मिनिमम लॉट साइज इन अ प्राइमरी मार्केट was 1 crore for the diversified assets and 25 crores for the concentrated assets. Secondary market में जो lot size था, that had been already cut to 25 lakhs earlier. High ticket size restricted participation mainly to the large institutional investors. New norm says that minimum investment has been reduced in the primary market allotment as well. So in case of primary market allotment, now you can invest even if you have 25 lakhs, you can participate in the infrastructure investment trust. So harmonized with secondary market encourages wider investor base, जिसमें high net worth individuals है, family offices है, smaller institutions है, they can also now invest directly in the primary market into the infrastructure investment trust funds, because now the primary market limit has been reduced from 1 crore to 25 lakhs. Earlier units were held by related parties, were excluded from the public category unless they are qualified institutional buyers. Now, even if the qualified institutional buyers, related parties, they remained, even if qualified institutional buyers, related parties remain excluded, ensure genuine public flow. तो अभी भी
जो पब्लिक फ्लोट है उसको जेन्युइन करने के लिए ये जो रिलेटेड पार्टीज है related to qualified institution buyers, they have been excluded. Cash flow की distribution की बात करें, earlier holding company had to distribute 100% of the cash flow from the special purpose vehicle to real estate investment trust or infrastructure investment trust, even if it had losses. But now if the holding company has negative distribute cash flow, it can offset losses before passing it to the respective funds, balances realistic cash management with investor expectation. तो यहाँ पे अब realistic in cash management भी होगा with the investor expectations को यहाँ पे fulfill किया जाएगा, where if you have a negative cash flow, it can offset losses before passing, it can offset the losses, it can include the losses before passing the funds to the given instruments which have been mentioned. अब इसका फायदा क्या? सर लोअर एंट्री बैरियर, तो हम जैसे आप जैसे सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके आप 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है. इनहांसेस लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज सपोर्ट्स इंडियाज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बाय मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? आई गेस कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर. चलिए, so I have given you the quick recap. This is also important for you. Go through with the quick recap. What does it say? It says that SEBI has relaxed the norms for PSUs with government equity greater than 90% and revises norms for infrastructure investment funds. This is, you need to remember, ये 15% वाली फिगर इंपॉर्टेंट है. एक साल के अंदर मिनिमम एक साल के अंदर आपको टाइम दिया गया है एग्जिट करने का. अगर 30 डेज तक आप नहीं आते अपने पैसे लेने तो वो पैसा दे दिया जाएगा और 7 साल तक आपके पैसे को बैठकर वेट की जाएगी कि आप आएंगे और अपने शेयर दे के जाएंगे, लेकिन आपकी कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी. You cannot sell it anywhere else. You have to sell it there only. No other one is buying because it's no more allowed to be sold out in the stock exchanges. तो पर 1 करोड़ से 25 लाख कर दिया आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट. Earlier 1 crore, now it has been decreased to 25 lakhs. ठीक, related parties, even the qualified institution buyers, they are excluded ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें. तो मैंने दोनों रूल्स दे दिए आपको, पुराने और नए दोनों ही केसेस में जो चेंजेस हुए. आई गेस इट इज क्रिस्टल क्लियर. गिव मी यस सर सो दैट आई कैन मूव अहेड. ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व करें. क्वेश्चन देखो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेबीज न्यू फ्रेमवर्क फॉर PSU delisting. The relaxation applies to PSUs where the government already hold 90% or more equity. That is true. जहाँ गवर्नमेंट की इक्विटी 90% या उससे ज़्यादा है वहाँ पे ही सिर्फ और सिर्फ ये सब के सब चीज़ें आप कहो कि ये जो नए रूल्स हैं दे विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज दे वोंट बी एप्लीकेबल. उस केस में आपका वो जो पुराना चलता आ रहा है तरीका वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा. देयर इज नो चेंज इन दैट. Next is the new framework is applicable even to banks, NBFCs and insurance companies. No sir, these rules are not applicable to banks and NBFCs. That has been already made very much clear to you. Next is the reverse book building mechanism has been replaced with fixed price approach. That is true. The fixed price for delisting must be at least 15% higher than the floor price. That is true. Shareholder who do not tender their shares within 1 year exit window can claim proceeds up to 7 years from the stock exchange. That is also true. Hana? That is also true. Yes or no? So second statement is wrong. If second statement is wrong, then my answer should be 1, 3, 4, 5. So B option is the correct answer. Moving on to the next question or the next news, guys. The next news is again very important. It is related to World Bank. It is related to one of the announcements which have been done by the World Bank. Fifth point समझ नहीं आया. Fifth point बताया तो था. ये देखो दोबारा. Exit window remains open for 1 year. इसका मतलब आज अगर कंपनी ने अनाउंस किया कि we are delisting ourselves, तो उस केस में कंपनी has decided the price which is at least 15% more than the floor price. उस केस में you will be waiting for the shareholders to come, return their shares and take the money. अगर वो नहीं आते जैसे आपने आज अनाउंस किया 30 दिन के अंदर अगर नहीं आए तो 30 दिन के बाद आप वो पैसा दे देंगे किसे? एक्सचेंज को. एक्सचेंज उसे होल्ड करेगा 7 साल तक ताकि इन्वेस्टर अगले 7 साल में भी आकर
पैसा लेके जा सकता है, शेयर देके अपना पैसा लेके जा सकता है। इज इट क्लियर धनंजय? वही 5th पॉइंट यहां पे लिखा है, देख लो जरा। Shareholder who do not tender their shares within 1 year exit window can claim the proceeds up to 7 years from the stock exchange। 1 साल का एग्जिट विंडो दे दिया, इसमें कभी भी अनाउंसमेंट की जा सकती है। वंस द अनाउंसमेंट इज डन 30 days विंडो, आफ्टर दैट फंड्स विल बी विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड यू कैन रीच टू द स्टॉक एक्सचेंज टू विड्रॉ योर फंड्स। क्लियर हो गया? डन है। चलो अगली न्यूज। अगली न्यूज ज्यादा थ्योरेटिकल है और मैं इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा जो बेसिक पॉइंट्स है वो बताकर आगे निकल जाऊंगा। सो इन सितंबर 2025 वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दे हैव अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $212 million लोन अंडर द शोर प्रोजेक्ट। शोर की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी प्रोजेक्ट। स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी प्रोजेक्ट। दिस मार्क्स phase 1 of the shore program, which has total funding envelope of $850 million। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस पे टोटल जो फंडिंग होनी है दैट इज ऑफ $850 million। उसमें पहला जो लोन है वो आ चुका है, ये अप्रूव हो चुका है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, दैट इज $212.64 million। $64 million। इसकी बेनिफिशियरी होगी, डायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे अराउंड 1 लाख इंक्लूडिंग 70,000 वुमेन। इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे दैट इज अराउंड 120 और 1,20,000 पीपल। फंडिंग क्या है ये प्रोजेक्ट ध्यान से देखना। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। phase 1 $212 million loan has been announced for a total project value or program value of $850 million। The loan timeline is 23 years including the grace period of 6.5 years। Implementation will be done in Tamil Nadu, Karnataka। So Tamil Nadu, it will be implemented under the Tamil Nadu Green Climate Company। In Karnataka, it will be Karnataka Eco Restoration Society। Coordination will be done, so state project management units under the Forest Department working with Environment, Public Works, Agriculture, Fishery, Water Resources and Tourism Department, they all will be working together in order to implement this particular project। है क्या ये project? पहला, so livelihood and training support, training to around 1 lakh people, जहाँ पे focus होगा sustainable tourism, green jobs, eco tourism, skill development। Second is conservative initiative, protection and restoration of 30,000 hectares of skyscapes। Method will be mangrove plantation, sand dune restoration, green grey infrastructure and whatnot। उसके साथ साथ biodiversity protection, especially sea cows, turtles and migratory birds, their protection will be done। This is conservative initiative। Third is plastic pollution reduction, that is public awareness on recycling and waste management, strengthen linkage between the urban local bodies and private sector for solid waste management। This will be done under the third, I would say, key feature of this particular project। Then fourth feature is private sector engagement will be done to encourage eco-tourism investment as well as plastic waste mitigation। Now moving on to the environmental and climate context, India's coastline is pretty large and 1/3 of the coastline is vulnerable to erosion and extreme weather। So Tamil Nadu, first Indian state to ban single-use plastic in 2019, coastal hotspots like Chennai, then we have Kodalore and many more, they are highly plastic sensitive areas or plastic sensitive coast। Karnataka, important fishing hub and also vulnerable to erosion and cyclones। Why this project is important? So it will help in adapting the rising, adapting to rising sea levels, cyclones and saline issues। Then biodiversity conservation will protect marine species and ecosystem, sustainable economy, build blue economy opportunities, plastic pollution control and women empowerment will be provided under this particular project, and that is the reason this project is important। Direct question आएगा। World Bank का president, you all know that, Ajay Banga ji है, headquarter is in Washington DC and it was established back in 1944। IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development, is one of the organization of World Bank Group। Now consider the following statement regarding the shore project। World Bank has approved a loan of $212 million as a part of $850 million shore program। True, loan is provided by International Development Association
No, sir, it is provided by IBRD, not by IDA. This is also a group part of World Bank Group, but it is not true. Tamil Nadu Green Climate Company and Karnataka Eco Restoration will be implementing agencies. True. Loan tenure 23 years, grace period 6.5 years. True. Around 1 lakh direct beneficiaries will be trained with 70,000 women. That is true. So answer is going to be 1, 3, 4, 5. Second statement is wrong. Remember that. Moving on to the next news. Guys, I hope you must have heard about these two economists for sure. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इन दोनों इकोनॉमिस्ट के बारे में ना सुना हो. PV Narasimhan, very important name. We have discussed his initiatives, especially the 1991 and before that initiatives which have been taken. Along with that, we have talked about Dr. Manmohan Singh ji as well, former Prime Minister of India, and even he has served as the Governor of RBI. So recently there is a news. The news is PV Narasimha Rao Memorial Award for Economics 2025. So on 10th of this September 2025, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji has been awarded with the PV Narasimha Rao Memorial Award for Economics in Delhi, received by his wife Gursharan Kaur ji, and presenter was very important Montek Singh Ahluwalia, the former Deputy Chairman of Planning Commission, Senior Fellow at Center for Social and Economic Progress. This name is really very important. He was, I would say, obviously executive head of the Planning Commission after that Niti Aayog was introduced. This award is basically instituted by PV Narasimha Rao Memorial Foundation. Now let's quickly talk about Dr. Manmohan Singh and his career. Early career in economic leadership, Chief Economic Advisor 1972 to 1976, Finance Secretary, RBI Governor, Deputy Chairman, even Deputy Chairman of Planning Commission and Economic Advisor to PM, and after that PM himself. That is, if I talk about his entire career. These roles, they gave him strong exposure to macroeconomic challenges, fiscal policy and monetary stability. 1991 economic reforms were under the PV Narasimha Rao as finance minister. He was working, Dr. Manmohan Singh, under the PV Narasimha Rao. He has took charge during the India's balance of payment crisis, where we were having only 2 weeks of forex reserves to fulfill our import bills, and he was the one who has played a very important role in the LPG reforms which have been taken in the economy. ठीक है जी. अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो recently he has been given this particular award, and even he has served as the Prime Minister of India, and during his tenure as Prime Minister of India, he has launched Manrega, RTI, even he has launched RTE Act, that is Right to Education, National Food Security Act. These are some of the important government initiatives which have been taken in the past. So these were also taken under his headship when he was the Prime Minister of the country. Now, if I talk about this particular award, objective is to honor the individuals contributing to economics, governance, public policy and nation building. It is instituted by the PV Narasimha Rao Memorial Foundation, which is in Hyderabad, Telangana. President is K. Ramachandra. Remember that PV Narasimha Rao 1991-96, known as the father of Indian economic reforms. Notable past receivers are Ratan Tata, even Dalai Lama, and now Dr. Manmohan Singh has also received the PV Narasimha Rao Memorial Award for Economics. ठीक है जी, clear हो गया point, समझ आ गया. I guess no more discussion is required. Let's try to give the answer for this question. Consider the following statement. Kirti, that session will be scheduled maybe tomorrow or day after tomorrow. I'll check with my team after this session. और जैसे वो session schedule हो जाएगा, I will be sharing the link with you all. Consider the following statement about PV Narasimha Rao Memorial Award. The 2025 award was given to Dr. Manmohan Singh for his contribution to economics and national building. True. The award was presented by Montek Singh Ahluwalia. True. The award is instituted headquartered in Hyderabad. So this foundation institute is headquartered in Hyderabad. So keeping that in mind, third statement is wrong.
Moving on to the next one. Previous recipient was include Ratan Tata as well as Dalai Lama ji. This I have already given you the information. Dr. Manmohan Singh wife has received this. That is correct. So answer is going to be A option. I would say first three statements are more important. That can be asked in the examination for sure. ठीक है जी, मजा आया, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक प्रॉब्लम और है मुझे आप सबसे, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो प्रॉब्लम ये है कि जब से आरबीआई की नोटिफिकेशन अनाउंस हुई है, आई हैव सीन दैट यू गाइज हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग दी रेगुलर करंट अफेयर सेशन। अब आपको लगता है कि रिवीजन कर लूंगा उसमें हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन रिवीजन जब करने बैठोगे ऑलरेडी यू हैव मई, जून, जुलाई, अगस्त टू रिवाइज। उसमें अगर आपने सितंबर भी ड्रैग डाउन कर लिया तो उस केस में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सामान होगा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, वो टफ हो जाएगा। सो एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर को रेगुलर कर लीजिए, एंड जो आपका पास्ट रिमेनिंग है दैट कैन बी डन थ्रू आवर रिवीजन सेशंस और थ्रू द पीडीएफ्स। So here is the homework, guys. I'll give you 5 seconds or 7 seconds to take the screenshot. First question with reference to the 28th Universal Postal Congress. Consider the following statements. Take the screenshot. Do share your answers in the comment section. जैसे जैसे आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कम होने शुरू होंगे मैं ये होमवर्क देना छोड़ दूंगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन सितंबर 2025 सेबी रिफॉर्म्स। 5 seconds to go. Next, with reference to the objectives and features of the shore project, Kirti, I have answered your question, beta. So do check our YouTube channel at least twice before going to bed today. You will find a session either for Sunday or Monday. Thick? Got it? Moving on to the next one. PV Narasimha Rao. 1 second. लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन विल कंक्लूड। Done? Okay. So don't forget to hit the like button, guys, before leaving. Do share the link of this session with your friends, and do join my Telegram channel in order to download the PDF of this particular session. Thank you so much for joining. We'll catch you all in the upcoming sessions to go. Good luck. God bless you all.